नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 29 हासिल करने वाले ऐश्वर्य उपाध्याय। स्वागत करती हूँ ऐश्वर्य आपका स्टडी आईक्यू पर और आपको ढेर सारी बधाई। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Good to be here. We are so glad that you are here today with us। और ऐश्वर्य के बारे में बता दूं तो इन्होंने अपना बीबीए किया हुआ है और उसके बाद से ही फोर्सेस में जाना इनका एकमात्र मोटिव था। और बहुत ही यूनिक बात ऐश्वर्य के बारे में कि ही इज अ वेरी गुड डांसर। ही हैज बीन टीचिंग डांस प्रोफेशनली टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड नाउ ही इज ऑल set to join the forces. So glad to have you Aishwarya and you're such a talented person. Well, ma'am, मैं जो भी चीज पिक करता हूँ उसमें I just try to do my best and I think God has been kind with me. So yes. ऐश्वर्य सब बहुत सारी चीजें मैंने आपके बारे में बता दी है, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताएं। All right. Firstly, my name is Aishwarya Upadhyay. जो लोग ये नाम सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि लड़की का नाम है, तो the difference is it is Aishwarya and it's not Aishwarya. The funny bit is मेरे यूपीएससी इंटरव्यू में ये पहला क्वेश्चन था कि मेरे नाम का मतलब क्या है. So that's why I started off with my name. I've been living in Indore for the past 5 to 6 years. Before this, I was living in places like Kolkata, Jamshedpur, Odisha. मेरे फादर टाटा स्टील में 23 साल तक नौकरी कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसफरेबल जॉब थी. एंड फिर हम इंदौर शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरा परिवार, मेरे जो रूट्स है, मेरे जो नेटिव है वो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं. तो मैंने अपना ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से, बीबीए में. पर मुझे हमेशा से फोर्सेज ज्वाइन करने का हमेशा से मुझे फोर्सेज ज्वाइन करना था. तो मैंने क्लास 12 के बाद एनडीए एग्जामिनेशन भी दिया, जो मैं क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक था, है अभी भी. देन आई डिसाइडेड टू पिक अप अ ग्रेजुएशन कोर्स लाइक बीबीए क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था. सो आई थॉट कि बीबीए मैं टैकल कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास इकोनॉमिक्स भी था क्लास 12. So I considered BBA to be a decent graduation course, which could also act like a backup for me later. So while I was doing BBA, I kept preparing for exams like CDS. बल्कि मेरे final year में I gave the CDS examination, which I happened to crack at the first go. I went to 22 SSB Bhopal, which luckily again I happened to crack at the first go, and I secured an All India rank 41 for CDS 2018. But I had a medical condition because of which I couldn't join the forces. So that's when I decided to appear for examinations like the CAPF, which could still get me the uniform. So I think, yeah, this is where we stand at the moment, where I've cracked the CAPF exam and I'm looking forward to don the uniform for the country. Definitely, had a very interesting story. और मैं ये जानना चाहूंगी कि हमेशा से आपको एक जुनून था, जज्बा था कि फोर्सेस ज्वाइन करना है, यूनिफॉर्म पहननी है और देश को सर्व करना है. बट ये बहुत जरूरी होता है. एनडीए में आपका हुआ नहीं, सीडीएस में यू वर ऑलमोस्ट रिकमेंडेड बट मेडिकल कंडीशंस की वजह से यू वर आउट, और फिर सीएपीएफ. किस तरीके से अपने आप को कंसिस्टेंट रखा, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वेल, वेरी ट्रू मैम. आई थिंक कंसिस्टेंसी स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में इसलिए हो जाती है क्योंकि काफी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है. जो लोग इस प्रोसेस को जानते हैं, जिस डेट पे यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकलता है उस डेट से लेके जब तक मेरिट लिस्ट आती है काफी लंबा अरसा बीत जाता है उस चीज में. टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी इटसेल्फ इज अ चैलेंज. एंड आपने जो मुझे सवाल पूछा कि मैंने अपने आप को कैसे कंसिस्टेंट रखा कि एनडीए नहीं हुआ, सीडीएस में भी नहीं हुआ, एंड देन वाई सीएपीएफ. आई थिंक माय द मेजर रीजन बिहाइंड दिस वाज माय गोल. लाइक मैं काफी अपने दिमाग में श्योर था इस बारे में कि मुझे वर्दी चाहिए तो चाहिए. मतलब वो चीज मेरे दिमाग से कभी बाहर नहीं निकली थी. इसकी वजह यह थी क्योंकि लोग इसको एज अ जॉब वैकेंसी देखते हैं, लोग इसे एज नौकरी देखते हैं. आई सी इट एज अ वे ऑफ लाइफ, like to wear the uniform and serve the country in such an adventurous life and to be a part of such a great nation and by serving in such a manner, मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता. मैं इसको जनरली वे ऑफ लाइफ मानता हूँ एंड अपने पर्सनालिटी से काफी रिलेट करता हूँ क्योंकि इस सर्विस में, इस फोर्स में, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, यू नीड टू बी डिटरमिन्ड, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड जैसे आपने शुरू में मुझे मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जैसे डांस भी करता हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ. So I've got an all India rank and I also teach students dancing. The reason is because I'm very passionate and dedicated towards whatever I do. And this service actually requires that. And to do it for a country like India is nothing less than a dream come true. So I think the reason for that consistency is मेरा गोल था यूनिफॉर्म पाना, एंड मेरा गोल था मैं अपने पर्सनालिटी को बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकूं
और हर दिन एक अपना बेटर वर्जन बनता रहूं. तो वो गोल इज द रीजन बिहाइंड माय कंसिस्टेंसी. और ऐश्वर्या, जिस कन्विक्शन के साथ आप ये बता रहे थे, वो एकदम रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ मच डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स योर गोल. यू वर डेडिकेटेड टू योर गोल्स, अब बोलूंगी, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी अचीव व्हाट यू वांटेड विद UPSC CAPF ऑल इंडिया रैंक 29. Well, it was quite a shocker though when I got an all India rank 29. मुझे तो सिर्फ अपना नाम like लिस्ट में चाहिए था. एंड जैसे आपने कन्विक्शन की बात की एंड कॉन्फिडेंस की बात की, आई नेवर सॉ द ऑल इंडिया रैंक, आई नेवर सॉ द मेरिट लिस्ट. जब CAPF का पेपर था तो मैं सिर्फ पेपर को देखता था. जब फिजिकल मेडिकल था तो सिर्फ फिजिकल मेडिकल को देखता था. और जब UPSC का इंटरव्यू था, विच इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनीवन, मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करता था. एंड देन आई नेवर थॉट ऑफ द रिजल्ट, बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर्ड द रिजल्ट टू बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस. आप जिस कार्य में हो, आप उस कार्य में आप चलते जाओ, करते जाओ, लड़ते जाओ. रिजल्ट एक जस्ट एक बाय प्रोडक्ट है उस चीज को सिग्निफाई करने का. मुझे ऐसा लगता है इन And दिस it's very true एग्जामिनेशन. also that हम कहते हैं ना कि आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो. And if you believe in the process, process needs to be celebrated more than the result, because ultimately success follows the process. और एक्चुअली मैं एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंगली मैं जानना चाहूंगी, because you were choreographer, you were teaching students dancing. वहां से लेकर के एक अफसर बनने तक का सफर. How do you see yourself like this? Well, it was difficult initially because for something like for someone to be a dancer and a choreographer, it's a very different field. मैं उसको अब UPSC के लिए पढ़ाई करना, UPSC की कोई भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना, भले वो CDS, CAPF या CSE क्यों ना हो, वो काफी अलग फील्ड होता है. तो मैं इवन व्हेन आई वाज डांसिंग आई रियलाइज कि ये मेरा पैशन है, इस चीज से मुझे खुशी मिलती है. बट क्या इससे मैं आगे लेके जा सकता हूँ? डेफिनेटली आई हैड मेनी वेज. देयर वर रियलिटी शोज, there is Instagram today where I can put up reels and become famous. There are many ways to it. Like I can still continue teaching dancing to people, and I'm still doing that. But I realized that there is I'm more than just a dancer. I'm more than just a choreographer. There are things within me which can help the society at large, which can help this nation at large. So how can I make the best use of it? So I think that was, and while I was dancing, I realized कि मैं बहुत ज्यादा किसी चीज में अगर जाता हूँ, मैं काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ. एंड देन मुझे पता चला कि अच्छा, देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड UPSC. इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है. सो लाइक ओके फाइन, परफेक्ट, सूट्स माय पर्सनालिटी, सूट्स माय इंटरेस्ट, लेट्स गो फॉर इट. एंड अगेन इट वाज गिविंग मी द यूनिफॉर्म, सो व्हाई नॉट. आई थिंक दैट वाज द शिफ्ट. इट वाज डिफिकल्ट बट या इट वाज वर्थ इट. ऐश्वर्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को ये इंस्पिरेशन भी मिलेगा, बिकॉज पीपल थिंक कि अगर वो अनकन्वेंशनल फील्ड से कन्वेंशनल, इफ यू रिगार्ड इट एज कन्वेंशनल, बिकॉज एवरीबॉडी प्रिपेयर्स फॉर UPSC, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट इनटू UPSC. तो अगर बहुत ही अलग अलग फील्ड से हैं तो कभी अभी आप शुरू कर सकते हैं. दैट फील्ड डजंट डिफाइन यू, कि आप कभी भी अपना करियर पाथ नहीं चेंज कर सकते हैं. Absolutely not. And I personally believe that today is the first day for the rest of your life. So whatever you wish to do, you can start today itself. No one's gonna, there is no timeline that you live by. I mean, who decides the timeline? It's you. आप अपना timeline खुद decide करते हो. अगर मुझे आज एक संगीतकार बनना है, डांसर नहीं बनना, तो मैं आज से अपने राग प्रैक्टिस करूंगा. I decide कि आज मेरा day 1 है. So instead of saying one day I will do it, I would rather say day 1 of me doing it. So quoting Aishwarya's word again, that today is the day 1 of your rest of your life. So start doing your work on your day 1. Decide today, because it's the beginning of your rest of the life. It's so beautiful, Aishwarya. I think I would give the credit for this to my role model, Ranjit Bajaj. He's someone from the Minerva Academy, Chandigarh, wherein I had gone for my CDS preparation back in 2018. And people will not believe this in today's world where people are filled with distractions. He's someone who's always been with me, because मेरा phone का lock screen उनके साथ रहा है पिछले 4 साल से. And every time I use my phone and I see, चलो Instagram में देख लेते क्या चल रहा है, चलो Facebook में देख लेते क्या चल रहा है. I see him and I see his photo with me and I realize कि no, there is a long way to go and today is day 1, so I have to get going with whatever I'm doing. मैं जो कर रहा हूँ मेरे को उस पर पूरा फोकस करना है. That's when I keep my phone and I keep studying again. तो मेरा वापस ध्यान उस चीज में, पढ़ाई में वापस चला जाता है. So yes, day 1. तो ऐश्वर्या, ये तो हमने बात कर ली आपकी जर्नी की. अब थोड़ा सा प्रिपरेशन में बात करते हैं. और आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है कि वी वांट टू टॉक अबाउट दिस जर्नी इटसेल्फ. Yes, absolutely. बट थोड़ा सा हम प्रिपरेशन की तरफ आते हैं. स्ट्रेटजी तो आपने बताई, यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन फोर्सेस, फिर आपने BBA किया, यू वर प्रोफेशनली टीचिंग डांस, और उसके बाद से फिर UPSC की तैयारी करना. कैसे स्ट्रेटजी बनानी है?
किस तरीके से अपनी माइंडसेट को यूपीएससी सीएपीएफ के लेवल तक मैचअप करना है? राइट, आई एम श्योर जो लोग ये देख रहे हैं उन्होंने ये कई जगहों पर सुना होगा कि सारे टॉपर्स एक ही चीज बोलते हैं, बट नाउ आई एम इन दिस पोजिशन वेर एन आई कैन टेल दिस टू यू वेरी ऑनेस्टली कि प्लानिंग, जब बोलते हैं टॉपर्स की प्लानिंग जरूरी है, इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. व्हाई आई टेल यू, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. ये काफी लंबा प्रोसेस है, इसके बहुत अलग अलग स्टेजेस है. देयर इज नो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, एक प्रोसेस में 4 लेवल्स हो सकते हैं, कोई भी लेवल पे बाहर हो सकते हो. तो सबसे पहली चीज आप प्लान करो कि आप किस एग्जाम के लिए अपेयर होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. हैव द गोल इन योर माइंड कि आपका फाइनल गोल, अच्छा आपका फाइनल गोल है सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना. वहां से फिर पीछे आओ किसी के, अच्छा उसके पहले मेरे को यूपीएससी का इंटरव्यू देना है, उसके पहले फिजिकल मेडिकल है, एम आई फिट फॉर इट, उसके पहले रिटन स्टेज है, एम आई एलिजिबल एंड एम आई रेडी इनफ फॉर इट. सो आई थिंक दैट प्लानिंग शुड स्टार्ट, प्लानिंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप. एंड सीएपीएफ स्पेसिफिकली, अगर आप सीएपीएफ की बात कर रहे हो मेरे साथ, तो इसमें फर्स्ट थिंग इज आप सिलेबस देखो. सिलेबस से मेरा मतलब ये है कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, वन इज ऑब्जेक्टिव, वन इज सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव पेपर इज वेरी सिमिलर टू द सीडीएस पेपर and it has elements of the CDS paper like mathematics, logical reasoning along with GS. So there are 125 questions which you can attempt in 2 hours, which is very, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा काफी easy है, but काफी mixed bag है. You can figure out your own strengths and weaknesses. किसी का मैथ्स अगर अच्छा है तो वो 19-20 क्वेश्चंस निकाल सकता है मैथ्स के. किसी का जीएस अगर तगड़ा है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी ऑलरेडी कर रखा है, तो वो जीएस वाले सेक्शंस इजीली कैच अप कर पाएगा. The second paper is the main game changer, I believe. सेकेंड पेपर सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें एसेज, रिपोर्ट्स, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, ये वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं. इसके लिए यू विल नीड अ थरो एनालिटिकल माइंड. बाय एनालिटिकल माइंड मेरा मतलब यह है कि आप हर चीज को पढ़ो, देखो, अपने दिमाग में ढालो एंड ये देखो कि आप उस चीज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं. अगर कोई ऐसे आता है इंडियन आर्मी के ऊपर या फिर कोई ऐसे आता है डेवलपमेंट के ऊपर, मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ. एज सुन एज आई रीड द वर्ड डेवलपमेंट, मेरे दिमाग में अलग अलग पिलर्स बन जाने चाहिए. आई कैन टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई कैन टॉक अबाउट इंडियाज पोजीशन, आई कैन टॉक अबाउट द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की वहां पे सिचुएशन क्या है जो कि डेवलपमेंट के लेवल पे बेस्ट. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल टू से कि एक वर्ड पढ़ते ही, एक थीम पकड़ते ही आपके दिमाग में पिलर्स बन जाने चाहिए. तो ये एनालिटिकल माइंडसेट रखना जरूरी है सेकंड पेपर के लिए. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेकंड पेपर कंप्लीट करो. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट डू दैट, जिसकी वजह से उनका नाम फिर फाइनल लिस्ट में नहीं आता या फिर वो रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं कर पाते. तो इफ यू आस्क मी स्ट्रैटेजिकली हाउ डू आई पुट इट, आपको अपने दिन, आपका जो नॉर्मल डे चल रहा है उसको उस हिसाब से शेड्यूल करना पड़ेगा कि मैं पेपर 1 को इतना टाइम दे रहा हूँ, पेपर 2 की प्रैक्टिस में इतनी देर कर रहा हूँ. सो दैट विल डेफिनेटली रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्लानिंग. यस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, सिंपल. मैं प्लानिंग पे थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी. हाउ डिड यू मेड योर प्लान्स? Okay. So as soon as I could not get through CDS because of my medical condition, तो मैं दिल्ली गया था 1 साल की प्रिपरेशन के लिए 2019-20 में. तो एंड मेरा मेजर फोकस वर 2 एग्जाम्स. वन इज CAPF because of the uniform and another was civil services again because of the uniform, IPS, right? So civil services की तैयारी में आप ये चीज काफी लोग रियलाइज करते हैं कि आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हो 1 साल के अंतराल में. तो आई थिंक मेरा बेस वहाँ अच्छा बन चुका था. मतलब जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके बेस मैंने अच्छे बना लिए थे. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद इट. एंड देन व्हेन द CAPF पेपर वाज अप्रोचिंग, आई पिक्ड अप द प्रीवियस ईयर पेपर्स. ये आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड चीज है एंड लोग मॉक्स के पीछे भागते हैं, टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं, बट पीपल डोंट रियलाइज कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर गोल्ड माइन. आप अगर प्रीवियस 5-6 ईयर्स के उठा के देखोगे एंड आप अपने सामने लेके बैठोगे, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से कहाँ स्टैंड करते हो. इफ यू ट्राई जस्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल नो कि इफ यू आर क्रॉसिंग द कट ऑफ दैट ईयर और नॉट, एंड देन यू कैन रीअलाइन योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. सो आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर अ नेसेसिटी. लाइक आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद इट. आई इन फैक्ट सैट विद 2016, 17, 18 के पेपर्स. मैंने उन्हीं को आंसर किया, मैंने उन्हीं को OMR शीट में लेके आंसर किया, एंड देन आई चेक द ऑफिशियल आंसर की, एंड देन आई चेक द कट ऑफ मार्क्स कि अगर मैं इस साल में ये पेपर देता तो ये क्लियर हो रहा होता है. आई पर्सनली डिड नॉट गिव एनी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज एंड मॉक्स बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि मेरा प्रिपरेशन शुड जस्ट बी अलाइंड टुवर्ड्स UPSC का स्टैंडर्ड. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट गिव मॉक्स. यू डेफिनेटली शुड. फॉर पेपर 2 यू डेफिनेटली शुड, स्पेशली फॉर पेपर 2, बिकॉज पेपर 2 बहुत टाइम खत्म नहीं होता है लोगों का. 3 घंटे में काफी कुछ लिखना पड़ता है. 4 एसेज लिखने हैं, 2 रिपोर्ट्स लिखने हैं,
कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करना है, इंग्लिश वाला 25 मार्क्स का आता है वो कंप्लीट करना है, तो उसके मॉक्स देना काफी जरूरी है। एंड आई वुड से आप उसी टाइम पीरियड में दो, जैसे 2 to 5 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड पेपर, तो आप मॉक भी उसी टाइम पे दो अपने घर पे बैठ के या फिर लाइब्रेरी में जाके बैठ के या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, ताकि आपका माइंड सेट ऑलरेडी 2 से 5 के लिए प्रिपेयर्ड रहे। 2 से 5 यू हैव टू बी एब्सोल्युटली अलर्ट, आपका अटेंशन स्पैन वहां पे परफेक्ट होना चाहिए, ताकि आप मेन डे पे 2 से 5 परफेक्टली परफॉर्म करो। सो आई वुड से प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक्स फॉर पेपर 2 डेफिनेटली, एंड मल्टीपल रिविजन। मैं एम्फसाइज नहीं कर सकता कि बिना रिविजन के मतलब ये पेपर निकालना इम्पॉसिबल, कोई भी यूपीएससी का पेपर निकालना इम्पॉसिबल। ऐश्वर्या, टोटली एग्री टू योर फैक्ट कि कितना भी बात लोग कर ले, बट प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बहुत अंडरमाइन किया जाता है, दे जस्ट गो थ्रू, बट जिस तरीके से रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए उस तरीके से नहीं फॉलो अप करते। That's very true. I think that's also because of the hype around the whole mock test papers and this and that. Like I can say this from being an outsider. Like I have been someone who's not a UPSC वाला कि अरे मतलब दिल्ली में 6 साल रह चुका हूँ, and I'm talking from the point of view of an outsider कि I've just entered this field. मैं जब दिल्ली में भी था and when I'm preparing घर से भी, I've seen a lot of hype around test series papers, which is not wrong, which is absolutely okay. But that should not disturb the foundation. Foundation आपका previous year papers ही होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने वो सवाल पूछे हैं पहले, उस लाइंस में ही पूछेंगे, तो आपका प्रिपरेशन उससे अलाइन होना चाहिए rather than specific mocks. Mocks are good for practice, but वो standard basis यूपीएससी डिसाइड करता है. Yes. एक्चुअली जो भी चीजें आपने बोली है, मैं आपसे एक चीज पे थोड़ा सा और प्रकाश डालने के लिए बोलूंगी कि फाउंडेशन, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात होती है, एनसीईआरटी पता तो सबको होता है, बट जो डिमांड एग्जामिनेशन का है उस हिसाब से कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग द एनसीईआरटी, ये समझना इंपॉर्टेंट है। वेल वेरी ट्रू। मुझे ये रियलाइजेशन स्पेशली हुआ था सीडीएस के टाइम पे प्रिपेयर करते वक्त। सीडीएस में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से। पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज या सीडीएस और सीपीएफ के एग्जामिनेशन के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता है कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज आर एन एब्सोल्यूट गोल्ड माइन, वहां से डायरेक्ट वर्बैटिम क्वेश्चंस आते हैं। तो फाउंडेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल ट्राई टू फिगर आउट कि आपका फाउंडेशन क्लियर है कि नहीं। वो क्वेश्चंस उस हिसाब से फ्रेम होते हैं, because it's not always a one liner. There are statements given which you have to figure कि अच्छा ये सही था ये नहीं था, you know. So उसके लिए I think again as you mentioned कि लोग people keep talking about it, NCERT, but I think वो खुद के experience से ही लोग realize करते हैं जब एक बार attempt नहीं निकलता, then they realize कि यार नहीं, बड़ी बुक्स छोड़ो, पहले NCERT पढ़ो क्योंकि basis ही clear नहीं है। Because see the point is आप prelims में maybe you will pass, आप कहीं आगे वाले स्टेज में कोई इससे बड़ा एग्जाम होगा, फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज मेंस, वहां अटकोगे। अगर मान लो सीपीएफ की बात करूं मैं, आप पेपर 1 जो है आप क्लियर कर लोगे, बट पेपर 2 में आपको एक ऐसे लिखना है, एनालिटिकल ऐसे लिखना है, आपका बेसिस क्लियर नहीं है, तो हाउ विल यू राइट? वहां भी आप अगर आपने निकाल लिया, आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको इंटरव्यू में ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिए जो बेसिक क्वेश्चन है, राइट? आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे इंटरव्यू के टाइम पे मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ था, लाइक उसने ज्योग्राफी, उस लाइक द इंटरव्यू पैनल आस्क्ड द स्टूडेंट, द कैंडिडेट कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला ज्योग्राफी। And the funny bit is the interviews happened during December where the pollution is at its peak in Delhi. So the interview panel actually asked the candidate, why do you think Delhi mein pollution ho rahi hai? Which also has a certain geographical attribute to it. And the candidate could not answer it. हम जब group में discuss कर रहे थे, I felt कि dude, this is basics. Like how can you not get this right? So it's not कि आपको सिर्फ exam clear करने के लिए foundations clear करने हैं, आप समझो आप किस चीज के लिए जा रहे हो। You're going to become an officer, you're going to represent the state, you're going to represent this country. So foundations have to be strong. If your foundations are not strong, kahin na kahin you will face a problem. So yes, NCERT is like my heart jodta hu, NCERT is gold. I'm telling you, usse better kuch bhi nahi. First NCERT के notes, खुद के notes, फिर दूसरी books, फिर reference books. Yes. एक्चुअली ये हमने रिटर्न की बात कर ली, मैं थोड़ा सा क्विक आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसको जानना चाहूंगी। किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कैसे टैकल किया, क्योंकि हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है सभी में कि इंटरव्यू बोर्ड ने क्या पूछा, यूपीएससी बोर्ड, बिकॉज यूपीएससी इंटरव्यू इटसेल्फ इज अ ड्रीम। I mean, आपने just sum up किया उस चीज को अभी कि to just enter that campus, to just read Union Public Service Commission written behind you and to take that photograph itself is a dream. तो मैं इंटरव्यू की तो क्या ही बात करूं। It was actually a great experience. This was on December 13th, 2021.
I wasn't too well physically. मेरे को इंटरव्यू के 2 दिन पहले फीवर चढ़ गया था. I did not have COVID. I tested negative for it. But I don't know, for some or the other reason, just I think God was testing me. Let's see if you pass this test. You're not well. Now let's see if you go for the interview or not. That's a funny story, but that happened. Interview ka preparation, I got a lot of help from one of my mentors, Mahesh Bhagwat sir. He's an IPS officer. And he guided us very well. उन्होंने sources काफी अच्छे हमें बताया, and he kept sending us articles and tips and tricks of how to face it, because he's himself gone through this process and he's been selflessly helping candidates appear for civil services and CAPF interviews. So when I went for the interview, initially, तो of course when you enter, everyone's nervous. It is obvious. सबके चेहरे पे दिखता है कि आज UPSC का इंटरव्यू है. सबकी जिंदगी में टाई कभी नहीं पहनी होगी, but उस दिन टाई यहाँ तक बंदी है, सांस नहीं ली जा रही है. Things like that happen. But when I went there, I realized कि okay, fine. Everyone's nervous. मैं अलग कैसे हूँ आज यहाँ. So even when I was nervous, I did not show it on my face. I was having a gala time. I went there thinking कि this is my dream. It's coming true. Let me just enjoy this process. तो हम अंदर गए, हमारा वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, सिक्योरिटी चेक वगैरह हुई. And before the interview starts, they give you high tea. मतलब वो आपको सैंडविचेस देते हैं, कॉफी देते हैं. वहाँ की सैंडविच बहुत अच्छी थी, by the way. सैंडविचेस देते हैं, कॉफी देते हैं, चाय देते हैं. So वहाँ पे people, वो दिख जाता है चेहरे पे nervousness. But while I was having my sandwich, I was having my coffee, I was just generally talking to people कि क्यों तूने कितने सैंडविचेस खाए, मैंने तो 3 खा लिए. Things like that, you know, just to make sure कि आप calm down करो अपने आप. And the scariest bit was, I was the first one to go for the interview. Manoj Soni sir का board था मेरा. And before my interview, a lot of people had given me this feedback कि मनोज सोनी सर बहुत grill करते हैं, ऐसे ऐसे questions पूछते हैं. So I was initially, एक तो मेरा सबसे पहला interview, और मनोज सोनी सर, like मैं जैसे interview मतलब room के बाहर बैठा, I read his name and they made me sit for half an hour. I was like, oh, what questions are they preparing for me? मेरे को क्या पूछने वाले हैं? But then I also thought to myself, मेरा जो detailed application form था, वो मैंने काफी detailed में भरा था. Like I had given every single information about whatever I do. So I think interview पे आपने जो मेरे को question पूछा कि कैसा experience था, it totally depends on your detailed application form. आप अपने sports में, अपने hobbies में, अपने interests में क्या लिखते हो, आपका background क्या रहा है, आपने कौन सी exams दी है, आप किस place को belong करते हो. It is, I'm telling you, those become basic questions in the interview. So I think DAF के जो questions थे, मैं उसमें बहुत अच्छे से prepare करके गया था. And I think that is why मेरे को आधा घंटा wait कराया मेरे interview शुरू होने के पहले. So when I went for the interview, मेरा पहला question, as I said earlier, was, okay, your name is Aishwarya. Do you know the meaning of this name? So मैंने meaning explain किया, and then they appreciated it, and it was a conversation. It started off on a very light conversation. And then Manoj Soni sir is the first one. The chairperson is always the first one to ask questions. So उन्होंने कुछ questions पूछे about my background. He asked me the same question that you had asked me in that interaction before ki BBA से CAPF, what kind of a shift is this? So I was very much prepared about it. I was very sure. मैंने उनको बताया कि sir, my passion is armed forces. मुझे वर्दी हमेशा से चाहिए थी. तो मैंने इसीलिए ऐसा कोर्स लिया जिसके हेल्प से मैं प्रिपेयर कर पाऊँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ. So he understood, like I could justify my stand. And then बाकी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने भी मेरे डैफ से क्वेश्चन पूछे. मेरे पे I was the happiest because मेरे को डांस से बहुत क्वेश्चंस आए थे, बिकॉज मैंने बहुत सारी जगह डांस मेंशन किया था. एंड द मोमेंट दे यूज्ड टू से समथिंग अबाउट डांस, मेरे को खुशी होती थी कि चलो, द बॉल इज इन माय कोर्ट, आई कैन हिट इट एनीवेयर, मैं किसी भी तरीके से हिट कर सकता हूँ. तो वो क्वेश्चंस थे. इट वाज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन, लाइक दे वांटेड टू नो कि मैं व्हाट आर माय ओपिनियंस अबाउट सर्टेन थिंग्स. इफ आई एम अ डांसर, व्हाट डू आई थिंक अबाउट मे बी बॉलीवुड. Is Bollywood helping India become a better country in terms of, you know, is it our soft power? How is it our soft power? How is it different from the West? Things like that. Do I know about classical dancing? Why is classical dancing different from Western? Why is it that Indian dancers are behind and Western dancers are ahead in many ways? So these are questions wherein मेरे को समझ में आ चुका था कि वो मेरी पर्सनालिटी समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं परसीव कैसे करता हूँ चीजों. Situations भी एक दो दी गई थी मेरे को about, like for example, I'm commanding a unit and मेरा junior आके अगर मुझे थप्पड़ मारता है या फिर he does not listen to my command, what do I do? Now someone of my age I know would get infuriated and the person would say कि सर मैं तो थप्पड़ मार दूंगा, निकाल दूंगा, बाहर कर दूंगा. Everyone knows it, but how is the way that you can approach it? So my answer to this was, sir, ma'am,
I would personally talk to that particular officer. I would try to understand his grievance and then make sure that that grievance is addressed. ताकि बाद में issue ना आए. Now what that does is it gives an impression कि हाँ you have your आपका mental acumen आपको allow कर रहा है सोचने के लिए. तो ये चीज I think interview में बहुत अच्छे से वो दिखते हैं कि more than the what, they see how. They see the process. How are you answering? How are you reaching that conclusion? How are you reaching that opinion? I think that was how my interview went. More of a conversation and what is my thought process. And how you perceive the things. And that's very important and very, very explicitly defined by Aishwarya. Ki it's not about what you answer, but it's all about that how you answer. And it's the very important takeaway from this. So Aishwarya, this is all about your preparation. Any unconventional sources that you have used in your preparation? Right. So whenever I used to take a break while studying from my usual books, and whenever I used to eat, have my lunch or dinner, मैं हमेशा अपने सामने कुछ देखने के लिए रखता था for 20 minutes. So then I used to like scroll through like YouTube, and I always made sure that I surrounded myself in an environment which is helping me to focus in my studies and focus in the examination. There, I think right before my interview, if I remember, I wanted to read about Northeast because Nagaland issue काफी hype पे था and AFSPA काफी hype पे था. I think I found a video by StudyIQ itself, wherein there is a whole 1 hour 30-minute long session wherein the educator is talking about the insurgencies in the Northeast and the history of each and every state. So I think वो मेरे को काफी help किया था. I remember while having lunch मैं 15 मिनट देखता था, फिर by having dinner मैं 15 मिनट देखता था. I think StudyIQ took like 2-3 days for me to like finish that one video of StudyIQ. It was pretty helpful though. It helped me answer a few questions in the interview. Yep. So I would give StudyIQ that credit for sure. We are glad to know that, Aishwarya, and thank you so much for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. It was a wonderful chat, and to know about your journey was even more wonderful. So thank you, Aishwarya, and the entire team wishes you good luck, good health. Thank you.